conversation with Dr. Gauri Gupta on the subject reproductive health of women. Number one, the question that I need to ask, what is, because see, in India, except in cricket, even in cricket, aspiring athletes struggle because of finances. So how expensive is this? Can athletes from, say, the hinterland, can athletes from suburban cities? So part one is, can people afford it? Part two, how widespread is this phenomenon? I mean, do you have to come to a tier 1 city, or can you get this done in a tier 2 city also? Are there doctors like you, fertility specialists like you available for people to go to and seek advice? So two parts. Okay. So coming to the finance part of it, no, definitely this is a little costly affair, because what we are looking out is, media to get it out, and maybe freezing it. Okay. So this is a little high-tech technology, but yes, and the recurring cost of keeping it frozen over a period of say 10 years or so. So that will be late. It's just like you keep you keep your money or maybe your ornaments in a bank, FD, in a bank locker, and then you keep on need to keep on paying them for keeping it safe, something like that. Okay, so I would say that everything would fall within say 1 lakh of rupees. I don't think it should be. That is affordable. That is affordable for an elite athlete for sure. Yes, it goes to as high as 1.5 to also in some really expensive centers, but 1 lakh should be something that everybody should think about, like, that should be enough. That should be the second question, how widespread, I mean, are people there in say a relatively suburban city with not so much facilities? Can an athlete go there? Yeah, so a tier 1 city obviously has this facility. In a tier 2 cities also, wherever there is an IVF center, they would have facilities for oocyte freezing also, because they are freezing embryos. But what one should look out for is that whether they are doing a lot of embryo freezing only then, because embryo is a bachu which we create after putting sperms into it. So if an athlete is already married, then she can go for embryo freezing. If she's not, then she can go for an egg freezing. Okay, and embryo freezing is much more better than egg freezing, because once we thaw it, the eggs will be like, if we thaw say 10 eggs, freeze 10 eggs, we get around 8 eggs back after thawing it, like after defreezing it. But with an embryo, you get 100%. Okay, so ma'am, what are the side effects? What are the side effects in this, if any? Because athletes will be conscious that what can go through the body. What are there any side effects that they need to know? So we just 13 days of their time, okay, from day 2 of their menstruation starting day, and it's done. It's like eggs are collected on day 13 and they are frozen. After 4 to 5 days, she can join back all her activities and everything. There's nothing like, it's a daycare procedure. It does not require a very big anesthesia. It is a short general anesthesia, and the recovery time is absolutely nothing. In fact, she can join back the next day also. Okay, last 2 questions before I let you go. One, you said relatively no side effects in that sense. So is there any particular time period you will recommend that this is when you can do this? It's best for you or any athlete I mean, all I'm trying to say is an athlete peaks before, say, competitions, right? So you have to calibrate yourself, say, to an Olympic Games, to an Asian Games. Is there any kind of time frame that, okay, 1 month or 1.5 months or 2 months you have to dedicate to this phenomenon, that these 2 months you will not be able to practice? Is there anything like that an athlete needs to keep in mind? That's it. What I'm trying to say that is, she requires to dedicate only 15 days of her entire life for this. Okay, if she has a good ovarian reserve, she can just do 1 cycle of egg freezing. If she has a little less less eggs, have to do this process. Okay. So after this process, she can join back, say within the next 5 days, 6 days, she can join back for her all activities. And yes, the time period when this is done is usually day 2 of her menses. So it's usually done during the earlier part of her menses when she bleeds. Thank you very much. Thank you so much. Yes.
ये जो मेंटल हेल्थ और ये बबल लाइफ लेके हम लोग इतना बात करते रहते हैं, आपने कैसे डील किया इसको? घर नहीं जा सकते, किसी से नहीं मिल सकते, एक रूम में रहिए, बबल में रहिए, खाली टीम से मिलिए. Clearly you have that little world to live in. Even in Tokyo you cannot meet anyone. So how have you dealt with this entire COVID period? It's really difficult to be honest. ये बायो बबल, क्वारंटाइन, ये सब इसमें ट्रेनिंग करना इतना इजी नहीं है. स्पेशली आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है. इवन फिजिकली तो आप सफर कर ही रहे हो, बिकॉज जो आप ट्रेनिंग ग्राउंड में कर सकते हो, फ्रीली कर सकते हो, वो आप रूम में तो रह के नहीं कर सकते. एंड समटाइम्स आप इतना मतलब हाई ट्रेनिंग करके, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करके आपको लगता है कि ठीक है आप रिकवरी के लिए जा रहे हो, पूल्स जा रहे हो या टीम्स होना जा रहे हो, उसमें भी इतना वो है कि आप ज्यादा लोगों के साथ नहीं जा सकते. देन यू हैव टू वेट कि अगर दूसरा आएगा फिर हम जाएंगे. इतना इजी नहीं है, स्पेशली जब आप कहीं से जा रहे हो, वहां जाके आपको 7 या 14 डेज के लिए क्वारंटाइन करना है, रूम में रहना है, रूम में फूड, आप 24 आवर्स मतलब रूम में ही हो. आप कितना भी कोशिश कर रहे हो कि मुझे पॉजिटिव रहना, एनर्जेटिक रहना, लेकिन जब आप रूम में रहते हो एक नेगेटिविटी फिर भी आता ही है. और उस नेगेटिविटी से आपको कैसे दूर रहना, इट्स रियली चैलेंजिंग सभी एथलीट्स के लिए ना. क्योंकि आप फैमिली से दूर रहते हो एंड अपने रूम में रह रहे हो. स्पेशली जब आप टीम में हो, नॉर्मली आप एक टीम एनवायरनमेंट रहते हो, आप ग्राउंड में जाते हो, अपने टीममेट्स के साथ फन करते हो एंड बात करते हो, बट वो इन्वायरमेंट इतना अच्छा नहीं होता. बट या कोविड ने ये सब चीजें करनी सिखा दी. डील हम ऐसे करते हैं कि जैसे बायो बबल में थे 5-6 मंथ के लिए, जब स्टार्टिंग में लॉकडाउन हुआ तो यही था कि जो हमें रूम में थोड़ा बहुत काम दिया जाता था फिटनेस के लिए वो करते थे. एंड जूम कॉल्स कर ली कभी टीम ने. देन कोचेस भी यही करते थे कि हमें जूम कॉल्स करके कि अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ अच्छा फील नहीं कर रहे मेंटली इमोशनली, तो आप कभी भी कॉल कर सकते हो बात करने के लिए. एंड अगर किसी की फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है तो हमेशा शेयर कर सकते हैं. समटाइम्स क्या होता है हमारी फैमिली में कुछ होता है, हम किसी से शेयर नहीं करना चाहते, बट वो एक फ्रीडम थी कोचेस की तरफ से भी ना. एंड साई ने एक अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की कि एक सेफ एनवायरनमेंट में थे, बायो बबल बना के कि कोई अंदर ना आए, हम जाने, अच्छा हेल्दी खाना देना 3 टाइम पे. हॉकी इंडिया ने अच्छी टेक केयर की उस टाइम पे. डिफिकल्ट है बट ये है कि कोविड ने सिखा दिया अभी ना कि कैसे प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहना ना, कि आप ज्यादा लंबा ना सोच के कि ठीक है जो दिन आपके सामने है उसके बारे में सोचो कि आज मुझे कैसे ये दिन अपना एक स्केड्यूल करना है और कैसे इस दिन में मैं एनर्जेटिक रह सकती हूँ, पॉजिटिव रह सकती हूँ. बट डिफिकल्ट बहुत है, लेकिन हो जाता है मैनेज.